Good morning, everyone. Welcome to this class. This is the first class for Introduction to Conversational AI Data Science. And we will be discussing about the basics today, the first topic of the syllabus, that is the introduction. So introduction to NLP will be discussed today and somewhat about text analytics. And then going forward, we will be discussing about supervised and unsupervised machine learning for NLP. We will also be discussing a bit about deep learning based neural network approaches, RNN, CNN, attention-based models. So, how many of you have the basic idea about this subject of NLP? Because we need to discuss a bit about natural language processing and how this connects with the data science. Our subject is data science, but we want to work on data, and that data has to come from somewhere, right? And most probably that data will be coming from text or the image or the video. All those kind of images will be coming. Those kind of data will be coming. So why do we need to handle natural language processing part? Can anyone tell me that how does this raw data help us to get the work done for natural language processing? And why do we need that? Anyone? So we need to handle natural language processing part because in real world the data might come from some data set. First of all, there are multiple websites for data sets. You people also have many projects going on these days. Many of you are trying to shortlist the project for your capstone project also. So data set is one of the major part, and multiple applications can be built from that data. So let's discuss first that what is NLP and how does it help us? Natural language processing, it is part of linguistics, computer science, and artificial intelligence. So I have taken this website from Wikipedia, and mainly this website discusses about that we want to focus on the linguistics, the way we talk, right? So the way we talk, my tone and everything, that let's say you are watching an English movie and you want to convert it into Hindi, or maybe you are watching a Hindi movie and that has been brought from conversion from the South Indian movie thing, right? So South Indian movie dubbed cinema works on this kind of changes. South Indian movie Telugu or Tamil is converted into Hindi, and English movie is converted into Hindi. So all those kind of dubbed cinemas comes under this part, linguistic based conversion, right? And artificial intelligence, we need to work on this also because generally what happens is we have we these days we are building many applications. There are multiple applications. For example, we have our phone in which we have Google Translate, right? So there is Google Translate, or we have even our Google Assistant, and also there is Apple Siri. So there are many things that we have in our life which is helping us to get this NLP part done, right? We are saying something and the output is getting done for us. All those things are being done through AI only on the back end. So all these things are concerned with the interaction between computers and the human language. So we are saying something and computers are getting that work done for us. In particularly, how to program computers to process and analyze large amounts of data. And the goal of the computer is it is capable of understanding the contents of the documents, including the contextual nuances of the language within them. So the context is also very important. For example, we are writing, let's say, happy. So these days, we have been doing Happy New Year or Happy Christmas, all those kind of things. So generally we say Merry Christmas, but Happy New Year is one of the thing, and Happy Birthday is also very famous, right? So
what comes after happy, that kind of prediction is also part of this NLP only. So you want to write happy new year, or you want to say happy birthday, and so there are multiple examples of these kind of things, right? We have been using WhatsApp since many years now. In WhatsApp also, when we are typing, let's say I'm writing a sentence, the next prediction comes above, just above our keyboard. So generally I mean, we have seen that most probably center word is the one which we want to put the next word after that phrase. So all these things comes under NLP only, and we want to handle this part, because then only we can work on the data part effectively. So the technology can then accurately extract information and insights contained in the document, as well as categorize and organize the documents themselves. So that was the basic definition of NLP, and we need to work on these things, then only we can get the work done for us. So how many of you have a bit of experience working with the NLP part, using machine learning? Because you have studied machine learning also. You have studied data analytics also using Rapids in the last semester under the conversational AI branch only. So one student has raised hand. Yes, Arinjay. Yes, sir, I have experience. So you asking about that. Hanji. So what have you done? Have you built something? I made minor projects for three use cases in ML. First use case was spam filter classifier. Second usage was predicting stock price movement based on news deadline. And the third one was fake news classifier. Right now, I'm working on LSTM RNN and stuff. Okay, so stocks also, right? Stocks, yes, sir. Yeah. But I did from a data set. Hmm, Yeah, hmm, hmm, hmm. So all these are kind of linked with NLP only. You are right. And spam filter is kind of that only, spam or ham. So depending on the keywords within the email, we want to classify that that email or the message is a spam or not. Right. So it works on the base different. I mean, different algorithms are there for us to take decision. So what did you use for the spam filtering? Naive-Bayes classifier or something else? I used various models. I even used uh, multinomial naive Bayes. Uh-huh. I Okay. also used random forest. Random forest was giving more accurate results than other algorithms. Okay. So, why do you think that random forest gave better accuracy compared to others? It's an ensembling model, so Yes. there are many decision trees involved. Yes. So ensemble is one of the keyword that we will discuss in this subject also. And majorly the target of this subject is to work on all those things, but using rapids. So rapids is one of the keyword here to take. I mean, this is a takeaway word for us. Rapids is one of the NVIDIA based platform where we have to work on all those things which we have already done, but at a faster rate. So generally we have seen that when we are doing machine learning or deep learning, especially deep learning, in deep learning we use GPUs, right? So many of you, or maybe at least few of you, must have done GPU based deep learning. uh, some amount of practical work must have been done, and we all know that in that deep learning, I mean, we will be discussing these in detail, but this is an introductory class, because that's why I'm taking these things as a superficial level. So GPU based deep learning models come into play after the pre-processing part. So there is a general flow, that is called pre-processing of the dataset. Generally, we have the dataset first. So we get the dataset, then we do the pre-processing of it. Right. So pre-processing makes sure that our dataset is ready to go into the deep learning model or the machine learning model. So based on our machine learning or deep learning model, we are given the prediction. Right. So this is the most common flow of work in our machine learning or deep learning part. So deep learning or machine learning can be made faster using GPU, that we all know. But to improve the speed of pre-processing, why do we need to improve the speed of pre-processing? Because there might be a case that we have 1 billion images, right?
So we might have 1 billion images on our hand that we want to handle to get the work done. I will give you one practical example. For example, we all have ordered something or the other from Amazon.in, right? In India, we have used this website a lot. Recently, also in recently 1 or 2 days back only, the sale started on Amazon, the Republic Day sale. So many times what happens is, let's say that we ordered a pair of jeans and that did not come as I mean, the fitting did not come as the way we thought. So we want to return it, right? So we return Amazon's product. Now, there is a whole team in Amazon who is handling the return part. Why? Because when we return something, that same thing will be checked for its defect. So there might be multiple regions. There might be defect in the cloth. There might be that it does not fit. So the decision has to be taken that it has to be sent for the resale or it has to be discarded. So if it is a defective piece, it has to be discarded. It has to be sent for the resale. It has to be sent for the resale. Right. So these kind of decisions have to be taken. But on Amazon, we all know for a single product, we have multiple images, right? The front view, the back view, the side view. So there are multiple images and even the colors. So for a same pair of jeans, you might have I have seen this in mobiles especially. There are multiple colors of the same mobile. So, for example, we have four images per color, right? So one is black, one is blue, one is brown. ऐसे करके we have multiple images. So just imagine the number of products on Amazon. For example, there might be 1 CR, right? Let's say there are 1 CR products. This is for example, and then you have into four, thus because of the different side views, the front view, the back view, the top view, all those kind of things, multiplied by number of colors it is. So easily we have 8 CR images to handle when we want to do some pre-processing. For example, you want to build something like that, maybe recommendation engine or something like that needs to be done. So to handle that kind of images, which is very high compared to I mean normal textual data. So textual data easily manage हो जाता है because textual data does not have very high memory usage, right? अगर आपके पास 1 billion sentences हैं, that will not take much space compared to 1 billion images. So we have to handle all kinds of data. So there was a need to improve the speed of the pre-processing, right? We need to handle all those things. We need to do every kind of the pre-processing needs to be done so that we can send it for the machine learning or deep learning part. Now, this made us do I mean this made us do GPU parallel processing. So there is a concept of GPU parallel processing. We want to use this data set in a pipeline where parallelly we want to handle the data and the speed will be faster. So all these things need to be done. That's why we want to use rapids. Rapids is one of the way that it is one of the way to do the things in a parallel processing way in a faster manner. And this is possible for any kind of data. It can be image, it can be video, it can be text. So all these things need to be handled. So let's discuss about the textual data first. So can anyone tell me that what is corpus? What do we mean by corpus? Collection of sentences. So corpus, you are right. It is collection of sentences. So whatever data we have in a document, there are multiple sentences in it. It might be a PDF of a book. It may be a ebook, right? Or it may be just collection of random sentences. Anything can be there. So this is called corpus. And the basic operations we need to do is tokenization. Tokenization क्या होता है? Token is the smallest word present on this page, right, in the corpus. So we have multiple things. There are multiple challenges we need to handle. We need to divide the input text into words or the tokens by identify the
identifying the word boundary. So there are multiple things. All these are different uh, examples of operations on corpus that what we need to do. We might want to identify the paragraphs or the sentences. Let's say we have a data set in which we are talking about examinations, right? And we want to identify those paragraphs where we are discussing only about the rescheduling of the exam. This is just one example. So there might be multiple paragraphs in the text, and we want to classify that which paragraph is talking about the rescheduling of the exam and which one is not. So only one and zero classification needs to be done. One means the exam will be rescheduled, and zero means it is not being rescheduled. So this is one of the example. Extract the tokens. So we want to make our own dictionary. Let's say we want to make our own dictionary. We have multiple tokens in this. So we will be breaking each word into token, and then we will be generating one dictionary where uh, we might use it for multiple things. Then we can count the number of tokens or the words in the corpus. You can do the total of all the number of words that you have extracted. This is one example. Then you can also do the vocabulary count. Let's say that for a particular word, how many times it has occurred on a single page or in the full document. Find the patterns of the words. Patterns का क्या मतलब है? That let's say न्यू दिल्ली कितनी बार यूज हुआ है, ठीक है? Now this is a pattern क्योंकि हम bigrams की बात करें. This is called bigram because we are using collection of two words together. ऐसे ही trigram होता है, ठीक है? यूनिग्राम होता है, बाईग्राम होता है, ट्राइग्राम होता है. सो कलेक्शन ऑफ थ्री वर्ड्स टुगेदर इज कॉल्ड ट्राइग्राम. तो पैटर्न्स की बात हो रही है, तो आपने ये भी देखना है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज. यू यू माइट हैव टू इम्प्लीमेंट इट ऑल्सो लेटर ऑन, कि हमें ये ढूंढना है कि यार ये पैटर्न क्या कह रहे हैं, राइट? एंड बेस्ड ऑन दैट पैटर्न ओनली वी विल डिसाइड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पैटर्न. ओके, कितने पैटर्न आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं इसमें, इसका. Let's say you want to summarize something into fewer number of words. For example, right now you have a target of giving your capstone project, राइट? तो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के लिए आपको एक टाइटल बनाना है और एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना है. सपोज छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट लिखना है 100-150 वर्ड का. एंड दीज टू आर काइंड ऑफ एनएलपी प्रॉब्लम्स. लेट्स से यू हैव कलेक्टेड 10 research papers in that domain. Now you want to find the gist of it. You want to make your own title having 10 words. तो एक 10 वर्ड का टाइटल बना लो अप टू 10 वर्ड्स का, और एक 150 वर्ड की समरी बना लो. तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. दैट लेट्स से यू हैव 10 रिसर्च पेपर्स, सो हर पेपर में एटलीस्ट 2000 वर्ड तो होंगे. सो आप 2000 इंटू 10 कर रहे हो, 20,000 वर्ड्स के थ्रू आप ये दो डिसीजन ले रहे हो कि मुझे एक टाइटल बनाना है और एक एब्स्ट्रैक्ट बनाना है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द corpus based example, right? So this can be done. टर्म फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइप टोकन रेशियो हो गया, आईडीएफ. आईडीएफ आपने यूज किया हुआ है, टीएफ आईडीएफ. यू हैव स्टडीड आल्सो इन द प्रीवियस सेमेस्टर इन मशीन लर्निंग. सो दैट इज आल्सो हैंडलिंग number of words and their frequencies, and then we are generating the I mean we are taking the decision based on that, right? And then there are this zipf and Mandelbrot hypothesis. There are multiple things that we need to handle. So we might also discuss these two later on. Find the co-occurrence of the words. Co-occurrence में भी यही है कि आप let's say there is a sentence, उसमें दो वर्ड इकट्ठी आने ही आने हैं. लेट्स से आई वांट टू राइट दैट साहिल इज टीचर इन थापर. सो ये वाला सेंटेंस अगर बार बार आ रहा है सेंटेंस मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में, दैट इज काइंड ऑफ को-occurrence के साहिल और थापर इकट्ठा ही आएगा. सो दिस इज kind of co-occurrence. So there are multiple examples of different operations that we can do on the corpus. So I wanted to discuss this. Then we also want to learn a bit about probability because क्या होता है, there are multiple things that we need to handle. सबसे आसान तरीका है क्या probability के basis पे prediction करो. कैसे? For example, you have something, यू हैव ए डॉक्यूमेंट. आप उसमें टर्म फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, पूरा टेबल बना लोगे कि भाई जो दा आया है वो 5 बार आया है. या फिर आप उसके बाद लिख दो मे बी बर्गर उसमें आया है मे बी 4 टाइम्स. सो ऐसे करके आपने पूरी लिस्ट बना ली कि कौन सा वर्ड कितनी बार आया है पूरी लिस्ट में, पूरे पेज पे. सो बेस्ड ऑन दैट आप क्या करोगे, अगर टोटल 20 वर्ड्स हैं
तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 5/20, तो देख लो मतलब 25% प्रोबेबिलिटी तो द वर्ड की ही होगी। ठीक है, बर्गर की भी हो जाएगी 0.2%, तो ये 0.25 हो गया, 0.25। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, 0.2 इज फॉर द बर्गर। एंड सिमिलरली बाकियों का भी ऐसे करके हम प्रोबेबिलिटी निकाल के इनके साथ खेल सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी से देयर इज वन मोर एग्जांपल के जैसे हम व्हाट्सएप पे भी चैट कर रहे हैं, तो वहां पे भी नेक्स्ट वर्ड की जो प्रिडिक्शन हो रही है वो भी बैकएंड पे प्रोबेबिलिटी के थ्रू ही हो रही है, ये भी हम कह सकते हैं। सो लेट्स सी दैट व्हाई डू वी नीड प्रोबेबिलिटी। इट प्रोवाइड्स द मेथड्स टू प्रिडिक्ट और मेक डिसीजन टू पिक द नेक्स्ट वर्ड। ठीक है, तो यही चीज मैं बोल रहा था कि सीक्वेंस बेस्ड डाटा में जहाँ पे हमने लेट्स से कोई सेंटेंस लिखना है, कुछ करना है, तो वी हैव दिस थिंग, वी हैव टू डू सम प्रिडिक्शन, सो वी माइट वांट टू यूज प्रोबेबिलिटी कि भाई इस वर्ड के बाद या फिर दिस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स के बाद चौथा वर्ड यही आएगा। सो नाउ वी आई मीन these days we have RNNs also, डीप लर्निंग बेस्ड अप्रोच है जिससे हम ये सब कर सकते हैं। एक LSTM होता है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ऐसे ही एक अटेंशन बेस्ड मॉडल्स होते हैं। तो अटेंशन बेस्ड मॉडल्स में वी हैव ट्रांसफॉर्मर्स और देयर आर मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, सो ट्रांसफॉर्मर्स भी हम यूज कर सकते हैं। सो मल्टीपल एग्जांपल्स हैं अपने पास, मल्टीपल मॉडल्स की ऑप्शन है अब तो, बट द बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट वाज द प्रोबेबिलिटी ओनली। एंड to make the informed decision when there is a certain degree of uncertainty and some observed data. So we might want to take some decision ke, based on some collection of uh, scenarios. For example, there are COVID cases coming up बार बार, तो हमें वर्क फ्रॉम होम या स्टडी फ्रॉम होम करना पड़ रहा है। सो अगर ये दो तीन चीजें इकट्ठी होंगी तो भाई ये फोर्थ इवेंट होना ही होना है। ठीक है, तो वो वाली चीज है, to make the informed decision when there is a certain degree of uncertainty. It provides a quantitative description of the chances or the likelihoods। तो आपको ये सब भी करना पड़ सकता है, probability of sentence निकालना है या probability of next word in the sentence निकालना है, how likely to predict you as the next word, for example happy new year to you, या फिर हैप्पी बर्थडे टू यू। तो कुछ भी मतलब अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटीज में बहुत हेल्प हो जाती है। एंड फॉर ऑल दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिस्क्रीट सैंपल स्पेस क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, जॉइंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो मतलब ये वाली सारी चीजें हम यूज करेंगे। दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा डिस्कशन जरूरी था। एंड प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, द गोल इज टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। तो भी पीछे बात हुई है कि हमें लेट्स से वी वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर सम वर्ड्स और द सीक्वेंस ऑफ इट। सो द टास्क इज टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड यूजिंग द प्रोबेबिलिटी। तो इसमें काइंड ऑफ वी आर यूजिंग प्रोबेबिलिटी टू जनरेट द नेक्स्ट वर्ड। तो इसमें आई हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, मैंने एक बार पहले जैसे तुम लोगों ने छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाए हैं, माइनर प्रोजेक्ट्स, तो मैंने भी एक माइनर प्रोजेक्ट बनाया था वेयर व्हाट आई डिड वाज आई गेव द इनपुट ऑफ शेक्सपियर डेटा। तो शेक्सपियर का डेटा सेट था, उसके बेसिस पे आई जनरेटेड, मैंने एक बस फर्स्ट वर्ड दिया, आई गेव द इनपुट ऑफ द फर्स्ट वर्ड, मैंने लिख दिया यू। ठीक है, तो यू के बेसिस पे उसने बाकी के 100 वर्ड्स और जनरेट करने थे, तो वन बाय वन वो वर्ड जनरेट करता गया और पूरा उसने 100 वर्ड का पैराग्राफ बना दिया कि भाई यू को यूज करके मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, वो सारा प्रिंट करवा दिया हमने। एंड आई इम्प्लीमेंटेड दिस थिंग यूजिंग LSTM और मे बी आई थिंक बाई LSTM, बाई डायरेक्शनल LSTM होता है। तो ऑल दोज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डन, तो मैं आपको भी वो चीज़ करवाऊंगा। ठीक है, आई विल लुक इनटू दिस के ये हमारे सिलेबस में है या नहीं। आई थिंक RNN का थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है हमारे सिलेबस में, सो LSTM इज ए वेरिएशन ऑफ RNN ओनली, so we might do this practical also in our labs। नाउ टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड यूजिंग प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या, हमने तो पूरे का पूरा पैराग्राफ ही बना दिया था, बट यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द नेक्स्ट वर्ड के एक टाइम पे अगले वर्ड का प्रेडिक्शन करना है। गिवन द कॉन्टेक्स्ट फाइंड द नेक्स्ट वर्ड यूजिंग दिस, प्रीवियस एन वर्ड्स देखो और उसके बेसिस पे आप अगला वर्ड बताओ। ठीक है, तो अगर एक वर्ड है उसके बेसिस पे अगला वर्ड क्या होगा, दो वर्ड है तो तीसरा वर्ड क्या होगा, तीन वर्ड है तो चौथा वर्ड क्या होगा, तो वैसे वाला प्रेडिक्शन करना है। ए मॉडल विच कंप्यूट्स द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस थिंग।
और प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड, तो ये दोनों में से कुछ भी हो, और कंप्लीट द पार्शियल सेंटेंस इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल। सो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था शेक्सपियर वाला, बेस्ड ऑन कि भाई मेरे पास एक वर्ड था, उसके बेसिस पे मैंने नेक्स्ट वर्ड किया, फिर उन दो को यूज करके तीसरा किया, तीन को यूज करके चौथा किया, तो दैट इज ऑल example of probabilistic language model. Now the goal is to learn the joint probability function uh, of the sequence of words in a language. अब ये लैंग्वेज की बात क्या हो रही है कि भाई जो भी मेरा डेटा सेट होगा, फॉर एग्जांपल आई हैव शेक्सपियर डेटा सेट, तो शेक्सपियर डेटा सेट में आई हैव मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन, तो वहाँ पे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें मे बी देर आर 10,000 सेंटेंसेस, तो मुझे बेस्ड ऑन दो सेंटेंसेस आई वांट टू जनरेट सम जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जहाँ पे आई वांट टू जनरेट ऑल काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटीज के भाई इसके बाद क्या आएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कैट रोर्स इज लेस लाइकली टू हैपन देन द कैट म्याऊज। तो कैट का तो यही वाला साउंड होता है, रोर वाला तो नहीं होता, तो यही चीज है कि वहां पे हम हर तरह की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे बैक एंड पे। एंड दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स यू विल आल्सो सी इन नेव बेस, जब हम नेव बेस एल्गोरिथम पढ़ेंगे अगर है सिलेबस में, देन यू विल आल्सो सी दैट दीस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस probabilities are calculated in that multinomial Gaussian based all those kind of naive Bayes theorem अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे वाला प्रोबेबिलिटी हमें निकाल के रखना पड़ेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट वी वांट टू मेक द प्रेडिक्शंस। एनग्राम्स आर यूज्ड टू बिल्ड प्रेडिक्टिव एंड जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल्स। एनग्राम्स का एग्जांपल मैं पहले ही दे चुका हूँ। एनग्राम का मतलब है कि या तो यूनिग्राम की बात करो सिंगल वर्ड की, बाईग्राम की बात करो कि ये वाले दो वर्ड इकट्ठे आएंगे, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क, ठीक है, ये न्यू दिल्ली, तो ये दोनों वर्ड इकट्ठे ही आएंगे, या तीन वर्ड इकट्ठे आएंगे, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर, तो हैप्पी न्यू ईयर मोस्ट ऑफ द टाइम इकट्ठा आता है बहुत बार, ठीक है। बहुत रेयरली होता है कि अगर हैप्पी न्यू बोल दिया तो तीसरा वर्ड ईयर की बजाय कुछ और हो, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर इज द मोस्ट कॉमन फ्रेज वी यूज। तो ये बाईग्राम ट्राईग्राम तो इनकी बात हो रही है, ठीक है, बाईग्राम्स ट्राईग्राम्स, तो ये सब हमारे एनग्राम्स हैं, तो एन चेंज कर लो, यूनी बाई ट्राई, तो इस वहां से नाम बना एनग्राम्स। Continuing. So this is a very famous quote. This was the concept that started the NLP part. ठीक है, मशीन ट्रांसलेशन कहाँ से शुरू हुआ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहाँ से इंटरेस्टिंग हुआ, वो यहाँ से इंटरेस्टिंग हुआ दैट देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड वॉरेन वीवर इन 1947। ये भाई साहब ने क्या किया, ही स्टडीड, ही वाज रीडिंग ए सेंटेंस, एंड उसने पढ़ा तो वो रशियन में कुछ आर्टिकल था, उन्होंने ये बोला दैट दिस इज रियली रिटन इन इंग्लिश, क्योंकि रशियन दिखने में तो इंग्लिश ही लगती है, बट इट हैज बीन कोडेड इन सम स्ट्रेंज सिंबल्स, आई विल नाउ प्रोसीड टू डिकोड। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द मशीन ट्रांसलेशन स्टार्टेड। अब मशीन ट्रांसलेशन हम उसको भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन वर्ल्ड वॉर 2 देयर वाज कोडेड मैसेजेस दैट वर बीइंग सेंट, राइट। एंड इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, मुझे वो याद नहीं आ रहा, बेनेडिक्ट कम्बरबैच की मूवी थी, इन दैट ही एक्टेड एज दैट पर्सन हु डिकोडेड दैट थिंग, डिकोडेड द मैसेज। तो ट्यूरिंग मशीन, एलन ट्यूरिंग के ऊपर था वो मूवी, तो एलन ट्यूरिंग का रोल था बेनेडिक्ट कम्बरबैच का, शर्लॉक होम वाला हीरो है जो अपना, तो उसने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, तो उसके ऊपर वो मूवी थी। सो दैट दैट आल्सो वाज काइंड ऑफ ऑन द सेम थिंग कि भाई मुझे डिकोड करना है, ठीक है। तो मशीन ट्रांसलेशन में बहुत कुछ आ जाता है। मशीन ट्रांसलेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, उसको आप अपने मदर टंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, और इफ आई एम टॉकिंग इन पंजाबी यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश, सो दोज काइंड ऑफ ट्रांसलेशंस दीस डेज दैट वी सी आर मशीन ट्रांसलेशन का टॉपिक, ठीक है। तो मशीन ट्रांसलेशन इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। In fact we already have Google Assistant to tell us that which language the word is, and then what should be the next word based on that, or maybe what is the meaning of it. So there is a this triangle walk, इसका अब बोलना कैसे है, वॉकुअस triangle for translation. This was a triangle given in 1968 research paper. I will add the link at the bottom of the slide कि ये कौन से research paper से आया है, but this is a very famous triangle when we want to use this translation part, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि the first thing is that you are
trying to convert word to word translation. Let's say that this is a class को मैं हिंदी में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो आप वर्ड टू वर्ड कैसे करोगे इसको? ठीक है, तो मतलब अगर आप वर्ड टू वर्ड करोगे भी तो वो मज़ा नहीं आएगा, या वो मीनिंग एक बार में नहीं बनेगा जो एक नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस में बन रहा है। तो वर्ड टू वर्ड वाला थोड़ा सा लो लेवल कन्वर्जन माना जाता है, कॉन्टेक्स्ट खत्म हो सकता है। देन देयर इज सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स, कॉन्टेक्स्ट एंड देयर इक्विवेलेंस। इससे ऊपर फिर एक सिमेंटिक स्ट्रक्चर है, फिर एंड में इंटरलिंगुआ आता है। दैट दीज आर द फोर स्टेजेस ऑफ ट्रांसलेशन, राइट? सो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज द लोएस्ट वे ऑफ ट्रांसलेटिंग। देन देर आर इम्प्रूव्ड वर्जन्स। तो ऐसे करके ये ट्रायंगल दिया गया था, वॉकर्स ट्रायंगल फॉर ट्रांसलेशन, जिसमें उन्होंने बताया कि हम मल्टीपल चीज़ों को कंसीडर करके इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। द ट्रांसलेशन कैन बी इम्प्रूव्ड फॉर इवन फॉर द मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन, because there might be a case that maybe the Prime Minister of India has gone to, let's say, some यूएई कंट्री, ठीक है? तो वहाँ पे लोगों को हो सकता है हिंदी ना समझ आए, चलो यहाँ पे तो फिर समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मिस्टर मोदी हैज़ गॉन टू इटली, तो वहाँ पे हिंदी किसी को समझ नहीं आएगा, राइट? सो मे बी फॉर दोज पीपल इट विल बी बेटर अगर जो भी मोदी हमारे बोल रहे हैं वो उसको कन्वर्ट करके साथ के साथ इट इज़ बीइंग सेड इन देयर नेटिव लैंग्वेज। तो वो जो ट्रांसलेटर है, जो वो जनरली उनके बीच में एक बंदा बैठता है, ट्रांसलेटर, सपोज इटली पीएम वर्सेस इंडियन पीएम के बीच में, तो उसकी बजाय एक मशीन के थ्रू ही वो काम हो जाए, तो दैट इज द काइंड ऑफ गोल फॉर अस। सो ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन नाम का एक टॉपिक है, एंड दिस इज काइंड ऑफ ए हार्ड प्रॉब्लम बिकॉज जो मैंने अभी बताया, एग्जांपल दिया, दैट इटली एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर इकट्ठे बैठे हैं, दे माइट वांट टू have the translator with them if they want to talk in their native languages. So the idea of the ability to make anyone speak to anyone without the boundary of languages is the most appealing idea. अब चलो, इटली हो गया, इंडिया हो गया, ये सब तो हम मैनेज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमें कुछ एलियन की बात को डिकोड करना है, देन ऑल्सो वो बहुत मुश्किल प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट हैव द वोकेबलरी और वी डोंट हैव द डेटा सेट अलॉन्ग विद दैट। तो डेटा सेट का बहुत बड़ा एक रोल हो जाता है देयर। आई मीन दिस इज वाई डेटा साइंस इज having very high weightage in these kind of problems. तो ये डेटा साइंस के ही प्रॉब्लम है कि हमें पहले तो डेटा चाहिए उस प्रॉब्लम का, एंड देन वी वांट टू generate the probability models. That is the easiest way to do it. Then we want to take the decision. The goal of the automatic translation is to produce error free translation, जो कि possible generally नहीं होता, error ना हो ये कैसे हो सकता है? Preserve the meaning of the source language. So even if you are converting some Punjabi sentence into English, आप एक बार ट्राई कर लेना गूगल ट्रांसलेटर पे। राइट नाउ द बेस्ट ट्रांसलेटर अवेलेबल इन द वर्ल्ड इज गूगल ट्रांसलेशन, राइट? इससे ऊपर तो क्या ही होगा। गूगल हैज ऑलरेडी वर्कड ऑन दैट, आई मीन इन एक्सटेंसिव फॉर्म सिंस मेनी इयर्स नाउ। सो ये सब तो है ही है। तो हमें डेटा को हैंडल करना है, that is the major thing, and this is the ideal state that we want to convert our data in error free translation form. Parallel corpora aids in the development of AMT. ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन के लिए आपको मल्टीपल डेटा सेट्स चाहिए। आपके पास इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, वो वाला पूरा एक डिक्शनरी चाहिए, राइट? नॉट ओनली डिक्शनरी बट द प्रॉपर ट्रांसलेशन। फॉर एग्जांपल इफ समवन वांट्स टू work on it, I mean they can, what they can do is, the best example is they can watch English movie in Hindi dub, right? So if someone is doing that, obviously, I mean there are dubbing artists, तो उन्होंने most of the movie को उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करा है। ऑब्वियसली जो इंग्लिश स्वैग होता है, इंग्लिश जो डायलॉग्स होते हैं, वो हिंदी वाले से काफ़ी अलग होते हैं कई बार, जहाँ पे स्वैग थोड़ा सा उन्होंने मारना होता है। अदरवाइज 99% ऑफ द मूवी इज एक्चुअल ट्रांसलेशन ओनली। तो वहाँ पे हम एक मूवी का डेटा सेट उठा के, इंग्लिश और हिंदी मूवी दोनों उठा लो,
उसी का डब्ड वर्जन। तो वहां पे वी कैन से कि हम अगर मूवी से कुछ डाटा निकाल पाए, देन देयर विल बी पैरेलल कॉर्पोरा एड, और बहुत बड़ा वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा, पूरे पूरे पीडीएफ बन जाएंगे इंग्लिश वाले का वर्सेस हिंदी वाले का। तो ये एक काफी बड़ा चैलेंज हो सकता है if someone wants to work on this machine translation, but then there is a challenge of vocabulary also, क्योंकि कोई भी एक मूवी है उसका कुछ सेट ऑफ vocabulary होगा, ठीक है। कोई इंडिपेंडेंस के ऊपर मूवी बनी है तो वो नॉर्मल सलमान खान वाली जैसे कुछ अलग ही स्टोरीज होती हैं, या फिर किसी और एक्टर की कोई और मूवीज होती हैं। तो मतलब मेनली थीम की बात कर रहा हूँ मैं, कि डॉक्यूमेंट्री मूवी का रोमांटिक मूवी के साथ या फिर एक्शन मूवी के साथ इन सब के वोकैब्स अलग होंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई वी वांट टू आल्सो कंसीडर दैट पार्ट, अगर हम ये वाला एग्जांपल ले भी रहे हैं, इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट। देन देयर इज वन एग्जांपल, अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना चाहो। सो example is by using this EMBT, example based machine translation, कि आप example देके उसको सिखा रहे हो अपने मॉडल को। lazy learning भी बोलते हैं इसको। For example, this is English conversion to Swahili. This is one of the language of I think East Africa, Uganda, all those kind of countries speak this language, Swahili. So this is my house can be converted into this Hai, Ni, Nyumba, and Yangu. So these are the words, right? And based on these four sentences, if we want to convert this fifth sentence into its Swahili translation, so this is my, तो दिस इज तो चलो पक्का पता है कि यही दो वर्ड आएंगे। अब माई नहीं पता कि यार माई वाला ये वाला वर्ड है या ये वाला वर्ड है, तो हम कहीं और से मैच कर लेते हैं। तो आई रन विद माई डॉग, तो यहाँ पे माई वाला है एग्जैक्टली तो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, वेंगू है यहाँ पे, येंगू है। तो मुझे लगता है कि इसके साथ का कुछ होना चाहिए, स्पेशली अब ये जैसे माई है तो माई वाला, अब माई हाउस जैसे ऊपर था वैसे ही यहाँ पे है, तो न्यूम्बा येंगू। तो हो सकता है कि यार दो बार ये न्यूम्बा आया है, माई वाला पहले है, तो माई वाला में यही वर्ड, तो यही वाले तीन वर्ड एज इट इज आ जाएंगे। एंड देन डॉग कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस सेंटेंस। तो हम ऐसा कुछ ना कुछ करके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से कर सकते हैं। ये एग्जांपल इसलिए लिया गया है क्योंकि हम हिंदी पंजाबी का तो कर लेंगे आगे पीछे करके, बट मॉडल्स के लिए तो जैसे हमें ये स्वाहिली लैंग्वेज नहीं आती, तो मॉडल को तो वो वाली लैंग्वेज नहीं आती, तो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ एग्जांपल हैज बीन टेकन। एंड सो दैट्स व्हाई दिस इज द थिंग, अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे द आउटपुट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। And there is this is called EBMT. The second way is SML, statistical machine learning. Translation models with language specific parameters and train model parameters and apply to unseen data. So this kind of work can be done, and this is helpful for doing the attention based work, especially word या फिर phrase based translation करना हो, word to word translation करना है या पूरे का पूरा phrase करना है, तो ये चीजें करने के लिए हमें अ, ये मॉडल्स की जरूरत पड़ सकती है। So there is another thing called neural machine translation these days. This is the most famous technique these days. इसमें क्या होता है कि हम किसी भी सेंटेंस को उसके एम्बेडिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एम्बेडिंग होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस बोला, तो इधर वर्ड होगा लेट्स से दिस इज माय हाउस, ठीक है। बट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे चार नंबर लिख देंगे। तो वो जो नंबर्स का कलेक्शन है इसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग। एम्बेडिंग बहुत ज़्यादा यूज होता है इन मशीन दिस डीप लर्निंग। तो न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं न्यूरल नेटवर्क्स यूज कर रहे हैं, तो हम उस एम्बेडिंग को यूज करेंगे। तो दोज नंबर्स विल बी जनरेटेड थ्रू सम टेक्निकलिटी ऑन द बैक एंड, राइट। तो न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन क्या कर रहा है, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ मॉडलिंग द मशीन ट्रांसलेशन प्रोसेस यूजिंग एएनएन। तो एएनएन है या आरएनएन है, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यूज करके हम न्यूरॉन्स को यूज करके काम करवाएंगे। एंड इसमें क्या कर रहे हैं हम, we could consider translation as a sequence with the source and the destination sentences, ऐसे करके। तो ये हमारा इनिशियल है, ये हमारा शायद फाइनल है। तो appearing in a time series, the words in E, F appear in this format, T11, T12 ऐसे करके है, and this 21, 21, 22, 23 respectively, ठीक है। Unlike the phrase based, this was my statistical machine translation,
जो हमारा न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन है वो अटेम्प्ट करता है टू बिल्ड अ सिंगल लार्ज न्यूरल नेटवर्क दैट रीड्स अ सेंटेंस एंड आउटपुट से करेक्ट ट्रांसलेशन। इसमें when you will learn more about this neural machine translation, especially you have the subject also this time in this conversational AI, you have a NLP subject. So in that you will be implementing this thing, and उसमें आपको एक attention based model हो सकता है करवाया जाए। attention based models में आजकल ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट आप एक पूरा सिंगल लार्ज न्यूरल नेटवर्क बना लो और वो एक सेंटेंस लेगा, दूसरा आउटपुट दे देगा और काफ़ी ठीक भी होगा। अटेंशन का मतलब है कि वो पूरे के पूरे पैराग्राफ के ऊपर फोकस नहीं करता, वो वन बाय वन 2-3 वर्ड के ऊपर अटेंशन करके जाता है। उससे क्या होता है, वो आगे पीछे का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जोड़ लेता है कि यार ये वाले 3-4 वर्ड का आपस में क्या मीनिंग है। तो इसको आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो सकता है कि आप ज़्यादा वर्ड्स को इकट्ठा ले लो। तो अटेंशन बेस्ड मॉडल्स का मतलब ये है कि वो कुछ-कुछ हिस्सों पे फोकस करके आगे जाता है। कंपेयर टू एलएसटीएम या बाई एलएसटीएम, वो क्या करते हैं, वो वन बाय वन वर्ड उठाते हैं और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे हम वो कह रहे थे, राइट? तो all these kind of things will be handled by you। LSTM का तो फुल फॉर्म ही होता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा लंबा चलता है, लेट्स से वो 8-10 वर्ड पे फोकस कर सकता है। उसमें वो आगे पीछे का देख लेता है कि करंट वर्ड से ये वाला और ये वाला आपस में कैसे लिंक है, या तो 2-3 वर्ड आगे पीछे जंप मार के आपस में कैसे लिंक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी वो एलएसटीएम हैंडल कर लेता है, पर अटेंशन बेस्ड मॉडल्स कैन हैंडल द फुल पैराग्राफ्स, फुल डॉक्यूमेंट्स। तो अटेंशन बेस्ड मॉडल्स आर बेटर देन बेसिक आरएनएन मॉडल्स। तो ये चीज़ थी। Now, this is the last thing that I want to discuss in today's lecture, hypothesis generation. So we might not be implementing this, but थोड़ा सा हाई लेवल एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। हाइपोथेसिस जनरेशन का मतलब ये है दैट फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये केस हुआ था। देयर वाज दिस एग्जांपल वेयर देयर वाज दिस पर्सन डॉक्टर स्वैनसन हु वाज ए इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। ठीक है, उनका क्या काम था, वो एक लाइब्रेरियन टाइप के बंदे थे। ठीक है, वो लाइब्रेरी में बैठते थे फॉर एग्जांपल। तो उनको बहुत सारे जो आसपास उनके स्कॉलर्स थे वो क्या करते थे कि वो अलग अलग चीजें हाईलाइट करके उनको कीवर्ड्स दे देते थे, फॉर एग्जांपल ये वाले कीवर्ड्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रेसेस एसोसिएटेड विद माइग्रेन्स, ये एक डॉक्यूमेंट से निकल के आया। और मतलब इनको पता था कि साइंटिस्ट ने ये वाला आर्टिकल पढ़ा है, क्योंकि आर्टिकल सपोज मैगजीन में छपते थे। तो उन्होंने मैगजीन दी थी उस बंदे को, और इस मैगजीन से उसने ये वाली समरी लेके आया, वो उनके पास ये सेंटेंस लेके आया। और इस बंदे का काम क्या था, इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट का काम था कि बेस्ड ऑन दिस सेंटेंस उनको उसके आसपास का और डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो और मैगजीन्स पूछ रहा है कि यार मेरे को इसके साथ के और मैगजीन मिल सकते हैं। तो इन ए वे इस बंदे को पता चल रहा था कि यार ये बंदा इसके ऊपर काम कर रहा है, इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। सिमिलरली उसने ये वाला भी उठाया, ये वाला भी उठाया। तो मल्टीपल लोगों के उन्होंने मल्टीपल सेंटेंसेस उठा लिए, और वो वहां से कुछ अपनी ही अलग ही थ्योरी बनाने लग गए बैठ के। तो पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है। डॉक्टर स्वैनसन एंड इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट प्रूव्ड दैट टू डिस्टिंक्ट नॉलेज सोर्सेस, अलग अलग दो जगह से अगर हम डाटा लें, it contains implications that cannot be seen within either of the two sets by using an independent lens। ठीक है, तो मतलब जनरली नहीं पता चल रहा, बट ये एज ए ह्यूमन बीइंग हमें पता चल रहा है कि अगर मैं अलग अलग 2-3 आर्टिकल्स को पढ़ रहा हूँ जो आपस में डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली वो सिमिलर नहीं भी लगते टाइटल्स के बेसिस पे या वो कैप के बेसिस पे, बट स्टिल दे आर समवट सिमिलर किसी न किसी फॉर्म में। तो उन्होंने इसके ऊपर काम किया, and he had shown that seemingly unconnected resources could be combined to form a new hypothesis। दो ही वॉज नॉट एन एक्सपर्ट, वो हमारे जैसा था, वो मेडिकल में कोई एक्सपर्ट नहीं था, पर उसने ये वाले सेंटेंसेस के बेसिस पे अगर आप इसको पढ़ो, स्ट्रेस इज एसोसिएटेड विद माइग्रेन, स्ट्रेस कैन लीड टू लॉस ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रिवेंट सम माइग्रेन। तो उसने समझ लिया कि यार ये ना थोड़ा बहुत हेल्थ के रिलेटेड है, स्पेशली माइग्रेन्स के आसपास की बातें हो रही हैं। एंड हाई लेवल मैग्नीशियम्स इनबिल्ट इनहिबिट एससीडी, दिस इज स्प्रेडिंग कॉर्टिकल डिप्रेशन। तो ऐसे करके उसके पास ये पूरा डाटा पहुंचा हुआ था सामने। तो उसने एक हाइपोथेसिस बनाया बेस्ड ऑन दिस दीज इंफॉर्मेशन, 8 सेंटेंसेस हैं। उसने बोला दैट मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कैन कॉज माइग्रेन। तो उस उन्होंने सपोज ये बोल दिया, ये शायद दिस इज द ट्रू एग्जांपल, उन्होंने शायद ये सेंटेंस बोला दैट मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कैन कॉज माइग्रेन। अब ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ,
in all these sentences, but उन्होंने ये hypothesis बनाया based on the information in front of him. ठीक है, तो फिर जब ये चीज उन्होंने प्रेजेंट की उन साइंटिस्ट के आगे, क्योंकि ये भाई सब खुद साइंटिस्ट थे, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट थे, तो बाकी साइंटिस्ट ने इनकी बात सुनी, एंड बेस्ड ऑन दैट some research paper also came later on that this kind of hypothesis generation can be done. ऑब्वियसली अब ये एक बंदे ने करी थी, अगर यही हाइपोथेसिस जनरेशन हम न्यूरल नेटवर्क के थ्रू करवाएं, दिस इज ए वेरी हार्ड प्रॉब्लम. बट आई एम नॉट प्रैक्टिकली श्योर राइट नाउ कि ये किस लेवल पे अभी इसके ऊपर रिसर्च हुई है. आई विल लुक इनटू दिस, आई विल फाइंड, अगर इसके ऊपर कोई रिसर्च पेपर मिलता है आई विल डिस्कस दैट अप्रोच ऑल्सो. बट मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जिस स्टेज पे हम चल रहे हैं, हम तो अच्छे से गूगल ट्रांसलेट भी नहीं कर पा रहे. राइट, अगर पंजाबी को इंग्लिश में करना हो तो वो उसी में उसका बेचारे का जोर लग जाता है. तो अभी रियल वर्ल्ड में तो गूगल ट्रांसलेट वाला जो चीज़ है वो, इसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसके ऊपर रिसर्च हुई होगी ज़्यादा. तो हाइपोथेसिस जनरेशन इज ए वेरी हार्ड प्रॉब्लम फॉर नाउ, बट इट माइट बी सॉल्व्ड इन द कमिंग ईयर्स, क्योंकि ये चीज़ अब हाईलाइट हुई है तो इसके ऊपर लोग काम भी करेंगे. ठीक है, एंड so the summary of today's lecture, especially about the corpus part, is that gather the statistical information about the corpus and the words. ठीक है, उसके बाद understand the words from context or the context words from a word, तो ये चीज़ के ऊपर थोड़ा सा काम करा जा सकता है. एंड देन लर्न टू एनकोड द contextual information about a word, उसके हमने इनकोडिंग कैसे करनी है उसके ऊपर काम करो. प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड, ये वाला हमने डिस्कस करा था. ठीक है, लर्न टू एनकोड ए सेंटेंस, तो हमने पूरे सेंटेंस को कैसे एनकोड करना है, देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स फॉर अस टू अवेल. प्रिडिक्ट हाउ लाइकली न्यू सेंटेंस कुड बी ए वैलिड सेंटेंस, मतलब इसका ये है कि आप जब वो वर्ड के बाद अगला वर्ड प्रिडिक्ट करवा रहे हो या दो वर्ड्स को यूज करके तीसरा वर्ड प्रिडिक्ट करवा रहे हो, तो उसको ये क्लासिफाई करना कि ये वैलिड सेंटेंस है कि नहीं है, तो इसके ऊपर भी काम करा जा सकता है. लर्न टू ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. So these are the few things that we can focus on, and this is kind of the uh, ओवरव्यू ऑफ एनएलपी. एनएलपी में ये सब हम कर सकते हैं. हाइपोथेसिस जनरेशन वाला पार्ट यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट दिस एज द 8th पॉइंट, दैट हाइपोथेसिस जनरेशन पे भी काम हो सकता है. आई एम नॉट श्योर टू व्हाट एक्सटेंट, बट दिस इज आल्सो द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर कि हम हाइपोथेसिस जनरेशन पे भी काम कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर, एंड आई थिंक टाइम भी हो चुका है. या, so time's up. I'm stopping the recording.